Good morning, everyone, and welcome to Morning Con Call for Saturday Technical and Daily Auto. If you see, Friday sitting session was a very range-bound trading session, and NIFTY managed to close about 19,600 levels. Overall, on a week-on-week basis, the index was trading flat to 0.5%, and during the week, we could see a good build-ups in real estate, auto, CPSC, and FMG stocks, which gained momentum while there was some profit booking in the peak overall. Overall, if you see on the weekly per se, there was a bullish candle close after testing the Nifty testing that 10 and 20 DM was on the weekly scale, and Nifty managing to hold above 19,500, which was a very crucial for the index. Now I see that if until unless Nifty is holding the lows of 19,333 levels, there should be a bottom for the index temporary. And if you slip below 19,333 levels, then only we could see a further downside towards 19,000 and 1,800 also. And we could see a movement upward towards to 20,200 to 20,400 in the upcoming upcoming session. Now, coming similar to the Bank Nifty is facing resistance near 44,600, 44,700, and we could see not a good trading session on that day. We could see all the gains closing in the session, and the index closing with a down marginally by 0.16 at 44,300 odd level. During the week, you see Anderson Bank and Federal Bank showed some strength, while the major ICICI Bank and HDFC Bank rebounding from 1,500 levels gives some cushion to the Bank Nifty, but it was staying on the flattish note only. Now coming to the Bank Nifty overall, if we see 43,500 to 45,000 would be a major range as a consolidation. Any break below 43,500 would slip and give an opening for another 1,500 points. In any up above 45,000 could see a fresh up move towards 46,500 odd marks. And now coming to the derivatives, when if we see there was an on long and running in the Nifty futures by 2 odd percentage, and PCR also dropped from 1.14 to 1.05. And if you see on the OI per se data, there were built-up witness in 19,800 calls, while the put side, if you see 19,700 acting as a strong base over there. Similarly, in the Bank Nifty futures seen a massive build of 9 odd percentage, and PCR has decreased from 0.94 to 0.81. And as per OI data, if you see 44,500 is acting as a hurdle for the index, while on the put side, 44,000 will act as a good support. Now coming to the FIs data, FIs have added their shorts by 10,000 contracts on a net short by 81,000 and long short ratio stands at 27 odd percentage. In the cash market, if you see FIs have bought to the tune of 317 crores, while DIs are buy by DIs are seller by 103 odd crores. On the long build-ups per se, if you see Indigo, Tata Motors, and Metropolis have seen a good long build-ups and were shorts of witness at Infosys, Engine, and Axis Bank. Stocks which were looking on a weekly basis or on a Friday's closing trading session at Tata Motors has given a good range breakout near about 670 odd levels. So if we see any dip towards 630, odd levels, should we use an opportunity to add long, and we could see an higher side towards 700, 750 odd zones in Tata Motors. Similarly, APL Apollo is also witnessing a strong breakout above 1700 odd levels, and if we see an upmove, we could see a fresh move towards 1750 to 1800 odds on the APL Apollo. And yeah, coming to the morning, if you see GIFT Nifty is showing a 25 points gap up. So if you see any move to any dip towards 19,650, 19,600 zones, that should be an opportunity to add longs in the index only. So that will be from mine, and hand over to Vishal sir for more updates. Thank you. Yeah, good morning, sir. Good morning, team. To start off with a couple of news flow. First is on TCS. So if you recall, TCS was conducting an internal inquiry for examination of allegation which was toward the resource management function. So they have concluded this now. This was started in the month of June, July, and the investigation found that 19 employees were involved and actions have been taken against them, and 6 vendor entities who were involved in this. So they have been debarred from the activity. Now, overall, I think though it's not a new news flow, today it has done a conclusion of it. So we see it's a neutral event on TCS. Next is on Intellect Design Arena. So they have announced they have partnered with the Premier Bank of Philippines for bank-wide digital transformation in APAC. Now, the deal value is not known and is not disclosed to the public, but overall, I think this is positive and provide a future growth for Intellect Design Arena. Next is on Indian Hotel. So company has announced an opening up of a Ginger in Noida. The hotel will have around 111 odd keys, and it is the fourth property of Indian Hotels and the Ginger brand in NCR. Overall, I mean, if you look at, definitely it's adding up to the growth of the company.
and it's in line with company strategy of expanding footprint through the management contract, which will support earnings growth as well as keep balance sheet leaner. So in terms of stock recommendation, we have a buy rating with a target price of 447. A couple of results which came out. First is on Avenue Supermart. The DMart reported numbers, though the revenue growth was, company has already disclosed a couple of weeks back at around 19%. But I think the concern has been on the EBITDA. The EBITDA growth has been lower than the revenue growth, and the margins has seen a compression. And overall, if you look at a PAT level, the profit has declined by 9% to around 623 odd crore. Now, given the way the stock is trading at the higher end of valuation, then probably this kind of number, it's not positive in terms of how the outlook or probably how the stock performance could be. So we see this as a negative overall for DMart. Next is on Texmaco Rail Engineering, positive set of results. The company has reported revenue is up by 66% on Y&Y basis to 805 odd crore. Net profit has also up by roughly 70 odd percent, and there has been a EBITDA margin improvement by roughly 50 basis point on Y&Y basis to 9.5% on the margins. Overall positive Texmaco result. Next, Mahindra & Mahindra announced its September sales number. The volume growth for the company was up 18% on Y&Y basis to 73,185 unit, and production has also seen increase by around 22%. Now, overall, the festive season is approaching, and companies are announcing, in order to boost their sales, companies are announcing a couple of marketing initiatives in terms of discounts. And overall, it's positive for the sector, and Mahindra is positive in terms of numbers they reported. Next is on Bajaj Electrical. So, company has announced a service contract worth 564 odd crore from Power Grid Corporation for a 400 kV transmission line in Andhra Pradesh, and this project is to be completed for within 21 odd months. So positive set of news flow from Bajaj Electrical. And next is on NHPC. Though I mean, if you look at the flash flood in Sikkim, particularly has very much impacted this under construction project, that is Teesta Power Station, and the company has released in the stock exchanges that they expect damage will impact, and it's costing roughly 780 or 8 odd crore. Though I think again parallelly company has highlighted the damages are fully insured, so the company don't see a major impact on its financial. They will be lodging this complaint to insurance company. So overall, a neutral set of event on NHPC. Last thing from my side is on Gati. So Gati has announced, which is a logistic company, they have announced total volume in quarter 2, which is up by 18% on Y&Y basis, and they have done around roughly 333,000 odd metric ton on account of strong pre-festive orders. And company has mentioned their Bengaluru transshipment hub is also online now. So overall positive set of volume number from Gati. Yeah, so that's all from my side, and I'll hand the team now over to you. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. So we'll begin with some further updates. First out of which is on Tata Motors, where the company sold a 9.9% stake in Tata Technologies Limited for rupees 1,613.7 crores to Ratan Tata Endowment Foundation and TPG Rise Climate Limited, which is a climate investment fund of TPG Global. The transaction, which values the IPO bound Tata Technologies at around $2 billion, is in line with Tata Motors' deleveraging strategy, according to a company release. Next update is on SpiceJet, where according to reports of Indigo's co-founder Mr. Rakesh Gangwal, the company is looking to buy a stake in rival airline SpiceJet, led to the latest shares surging 20% on the stock market on 13th of October. Next update is on Adani Enterprises, where the company on Friday informed the stock exchanges that the Corporate Affairs Ministry is probing the accounts of the group's 2 airports in Mumbai. The company said that the Office of the Regional Director, Southeast Region, Hyderabad, the Ministry of Corporate Affairs, had sought information and documents on the airports of Mumbai International and Navi Mumbai International Airport as well for the financial years 2017-18 and 2021-22. Next update is on Ashok Leyland, where Hinduja Group flagship company Ashok Leyland has secured an order from the Tamil Nadu state undertakings for a supply of 1,666 new buses
The city-based company also said that this is the single largest PSVI order received from the state transport undertakings and would further contribute to the company's dominant position in the bus industry. Final update is on Delta Corp, where the company has received fresh notices of alleged shortfall in the payment of GST to the tune of rupees 6,384 crores as per the regulatory filing made by the casino chair operator on 14th of October. This comes nearly 3 weeks after Delta Corp received tax shortfall notices amounting to rupees 16,822 crores. So overall, it should be a negative update going into today's session for Delta Corp. So this was all from my end. I'll now hand it over to Prabhakar sir for further updates. Good morning, team. India's trade data came for month of September. So the export declined by 2.6%. So year on year basis, it was $34.47 billion, and imports dropped by 15% to $53.87 billion. So the trade deficit was 5 months low. It was at $19.37 billion. But we have services which normally compensate, and we have some invisibles in way of remittances, which also takes care. So in very interesting news, now IDBI asset valuers were informed by the government on 15th October that bank has about 11,520 crores as deferred tax asset. There are about 20 properties in top 7 cities, 68 properties only in Mumbai, 20 in Pune. So the value of assets which government has given to the valuer is 11,520 crores, just for information. Finolex cable, there is Charbia brothers are fighting, Dilip and Deepak. So there is a NCLT case and Supreme Court. So due to which the stock has already corrected more than 18-20%. Still some correction is possible, but for a long-term investor, it would be opportunity to buy as a SIP, because we don't know how the case will go. Do not overexpose. Anantaraj real estate company has commenced 2 new projects by the company. One is in South Delhi, which is 7 lakh square feet. And one is in Tirupati, Andhra Pradesh, which is 10 lakh square feet. Cluster 2. No? So this is positive for Anantaraj. Kolte Patel came with the pre-sale number. Very good numbers. Q2 FY24. Their pre-sale number was 632 crores, which was higher by 72%. Collection was 472 crores, which is higher by 17%. So year on year realization was down. And in H1 first half of FY24, the company has acquired projects worth 3,450 crores. Very positive numbers on the pre-sale basis. Pre-sale on average, they are clocking 600-700 crores every quarter. So that works out to almost 2,500 crores. From 1,400 crores, it is almost 60% jump, which is very positive for them. Royal Orchid Regenta Hotels unveils 4th property in historic Mysore city with 48 rooms. Landmark car enters 9th state in India with MG Goa dealership. East My Trip launches Easy Darshan, a dedicated platform for spiritual tourism in India. But somehow, the conviction is not coming with Ease My Trip, because promoter is selling stake, and that is something which is dragging the company. Som Distilleries came with the results. So their net sales was higher by 67% at 248 crore. Profit after tax was higher by 80% at 14.9 crores. Lupin receives tentative approval for US FDA
Aplamide tablets. NBCC has received a work order for 80 crores for renovation, refurbishment of office building located in Visakhapatnam port. So I'm not too gung-ho about this stock. Even Den Network and GTPL Hathway came with the numbers, but not very impressive. So I've skipped those numbers. So HDFC AMC came with Skipper has won fresh orders worth 588 crores from domestic and overseas market. 468 from Power Grid and others. In domestic market, 120 crores from international market. Suntech came with the pre-sale. Pre-sale was 395 crores. And pre-sale growth was 17.2%. Collection was 214 crores. Company has 11 large projects in MMR with gross development value of 30,000 crores. Suntech has mentioned about IFCI deal joint venture for 750 crores, where 12,000 units of high quality hospitality units will be done. So that is positive, but Kolte Patel number wise is far better. And market cap wise, Kolte Patel is 3,800 crore, whereas Suntech is more than 5,000 crore. So I think Kolte has more value from current level. Ashiana is one more stock which we track, and Shriram property is one more. Loda, now the kind of deals happening, we are very positive on Loda and DLF. So real estate as a space will do very good. So that is where money can be made in short term. With that, over to you, team. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग ये कॉल को एक बार हिंदी में देख लेते हैं. फर्स्ट अपडेट टीसीएस के ऊपर. टीसीएस ने कंक्लूड किया है कि उनका जो रिव्यू था एग्जामाइन एलिगेशन जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट फंक्शन के था, उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है कि 19 एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हुए थे और एक्शन उनके अगेंस्ट ली गई है. ऑल्सो जो 6 वेंडर्स एंटिटी थे उनको ओनर एंड एफिलिएट्स ने डिबार्ट कर दिया है एनी काइंड ऑफ बिजनेस टीसीएस के साथ करने के लिए. और कंपनी ने रिटरेट किया है कि कोई भी इन्वॉल्वमेंट और फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी जो है उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा. और ये इशू है रिलेटेड बेसिकली ब्रीच, जो कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट है वो सर्टेन एम्प्लॉयज ने ब्रीच किया था, तो और वेंडर्स ने भी, जो सप्लाइंग कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने. तो मैनेजरल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे कंपनी ने ये फाउंड हुआ है और इन्वॉल्व है. देन नेक्स्ट अपडेट है इंटरलैक और डिजाइन अरीना के ऊपर. कंपनी ने पार्टनरशिप की है प्रीमियर बैंक के साथ, फिलीपींस बैंक ऑफ वाइड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एपीएसी में. पार्टनरशिप इंक्लूड करती है इंटरलैक्ट के जो आई क्रेडिट 360 लोन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उसमें, और एम रहेगा कि वो इम्प्रूव करेंगे बैंक का कस्टमर एक्सपीरियंस. और वैल्यू जो है डील की वो अभी तक पता नहीं है, बट ओवरऑल हम लोग देखें तो ये पॉजिटिव है इंटरलैक्ट के लिए. टेक महिंद्रा के ऊपर अपडेट है, जो मीडिया के अनुसार है कि टेक महिंद्रा बिल्ड कर रहा है 3 स्टार होटल्स आंध्र प्रदेश में. जो डेलीगेशन लेड बाय गुरुनानी और एक्सप्लेन होगा चीफ मिनिस्टर इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ का, और बेसिकली ये मेड होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच होटल. और हम लोग बिलीव करते हैं कि वन ऑफ केस ये मे बी इतना पैन इंडिया बेसिस पे नहीं होगा, बट ओवरऑल हम लोग देखें तो ये एक जॉइंट वेंचर हो सकता है क्लब महिंद्रा के साथ. हम लोग और वेट एंड वॉच फर्दर क्लियरिटी के लिए वेट करेंगे. देन इंडियन होटल के ऊपर अपडेट है. इंडियन होटल ने अनाउंस किया कि ओपनिंग जिंजर नोएडा में, और ये होटल्स होगा उसमें 111 कीज होगी और 4 जिंजर होटल है एनसीआर रीजन में. हम लोग बिलीव करते हैं कि इनलाइन है कंपनी के स्ट्रैटेजी के अनुसार, और एक्सपांड कर रही है फुटप्रिंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो सपोर्ट करता है अर्निंग्स ग्रोथ के लिए, एज वेल एज जो बैलेंस शीट लीनियर है उसके लिए भी. ओवरऑल हम लोग पॉजिटिव है इंडस्ट्री के ऊपर, पॉजिटिव डिमांड डायनामिक्स है इसके कारण. तो ओवरऑल इंडियन होटल्स पॉजिटिव है. लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है. टारगेट प्राइस है वो 447 है. देन लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के ऊपर अपडेट है. जो मिस्टर भगवती प्रसाद पंत है उन्होंने वाइड लेटर डेटेड सितंबर 29 2023 को दिया था कि टेंडर उनका जो रेजिग्नेशन था एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से.
बिजनेस डेवलपमेंट से। तो कंपनी ने उनको जो पर्सनल एस्पिरेशन और करियर ग्रोथ के कारण दिया था, कंपनी ने वो एक्सेप्ट किया है रेजिग्नेशन, और उनको रिलीज होगा ड्यूटीज अक्टूबर 25, 2023। द नेक्स्ट अपडेट है क्यूमीज के ऊपर। फेवरेबल ऑर्डर पास हुआ है सीआईटी ऑफ टैक्स डिमांड, जो पेटरिंग हुआ था अर्लियर ईयर्स में। उसमें एलिमिनेशन ऑफ टैक्स डिमांड होगा अराउंड 68.36 करोड़ का, और क्वाशिंग ट्रांसफर प्राइसिंग लेड पेनल्टी है 55.22 करोड़ की। देन डीमार्ट के ऊपर अपडेटेड, डीमार्ट के रेवेन्यू जो है वो अप है 18.7% से 12,624 करोड़ का। इबिटा अप है 12.7% से 1,004 करोड़ के अराउंड। मार्जिन जो है वो 7.96 है। नेट प्रॉफिट डाउन है 9% से 623.35 करोड़ रिपोर्ट किया। देन टेक्सोमार्को रेल एंड इंजीनियरिंग के ऊपर अपडेट है। रेवेन्यू अप है 66% से 805। नेट प्रॉफिट अप है 69% से अराउंड 20.2 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा सितंबर सेल्स आए थे, जो राइज हुआ है 18.14% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 73,185 यूनिट्स, वाइल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है 21.88% 79,410 यूनिट्स। एनएचपीसी के ऊपर अपडेट है। कंपनी ने एक्सपेक्ट किया है कि 788 करोड़ का जो वर्थ है डैमेज हुआ है, क्योंकि फ्लड इम्पैक्ट हो रहा है। 510 मेगावाट टीसा भी पावर स्टेशन सिक्किम में, क्योंकि फ्लड के कारण और डैमेजेस से वो फुली इनसिक्योर थे। तो कंपनी बोल रही है कि वो लॉन्च फॉर्मल क्लेम है डैमेजेस का वो करेंगी। देन बजाज इलेक्ट्रिक के ऊपर अपडेट है कि कंपनी को सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिला है 564 करोड़ का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से, जो बेसिकली 400 कीवी ट्रांसमिशन लाइंस करेंगे आंध्र प्रदेश में। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 21 मंथ्स में। गति के ऊपर अपडेटेड टोटल वॉल्यूम Q2 वॉल्यूम है वो राइज हुआ है 18% से ईयर ऑन ईयर 3,33,000 मेट्रिक टन अकाउंट स्ट्रॉन्ग प्री फेस्टिव ऑर्डरिंग के कारण। और कंपनी का जो बेंगलुरु ट्रांसशिपमेंट हब है नाउ ऑनलाइन हो गया है। देन ट्रेड डेटा के नंबर्स आए थे सितंबर मंथ के। एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ है अराउंड $34.47 बिलियन है, और इम्पोर्ट है वो भी डाउन हुआ है 15% से $53.87 बिलियन है। ओवरऑल ट्रेड डिफिसिट 5 मंथ्स के लो लेवल पे है। देन नेक्स्ट अपडेट आईडीबीआई एसेट के ऊपर उन्होंने बैंक को अपडेट किया है कि कुछ 11,521 करोड़ का डिफर्ड टैक्स असेट है। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो 20 प्रॉपर्टी पुणे में और अराउंड कुछ 60 प्रॉपर्टी मुंबई में है। तो वैल्यू असेट जो है वो 11,520 करोड़ का है। ये जस्ट अपडेट है। देन थिंकेबल के ऊपर अपडेट है। जो ब्रदर्स है उनके उनमें जो फाइटिंग चल रही है, तो उनके कारण एनसीएलटी की केस है। तो स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, यहाँ से और करेक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए। बट ये जब तक केस सॉल्व नहीं होता है तब तक क्लियरिटी नहीं आएगी, तो थोड़ा धीरे धीरे करके बाय करना चाहिए। देन कोलते पाटिल के प्री सेल्स नंबर्स आए थे Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 का। कंपनी ने प्री सेल्स 632 करोड़ रिपोर्ट किया है, जो 72% से हायर है। 472 करोड़ का कलेक्शन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो थोड़ा डाउन है, बट कंपनी ने एक्वायर किया है प्रोजेक्ट ओवरऑल ये ईयर में, और काफी नंबर्स अच्छे हैं। देन रॉयल ऑर्किड के ऊपर अपडेट है। फोर्थ प्रॉपर्टी वो मैसूर में स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ 48 रूम्स होंगी। देन नेक्स्ट अपडेट है इजमाई ट्रिप के ऊपर। इजमाई ट्रिप लॉन्च करिए इजी दर्शन, जो स्पिरिचुअली दर्शन के लिए। बट हम लोग देखे एक इम्पॉर्टेंट चीज, तो जो प्रमोटर है वो उनका जो स्टेक है वो सेल कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा कंसर्न का चीज है। तो इजमा ट्रिप को हम लोग इतना अवॉइड ही करते हैं। देन सोम डिस्लरी के भी नंबर्स आए थे। पैट 18% से हायर है, 14.9 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। देन लुपिन के ऊपर अपडेट है। यूएसएफडीए का अप्रूवल आया है अल्फामाइन टैबलेट्स के लिए। देन जीटीपीएल हैथवेल के इतने कुछ नंबर्स नहीं आए थे अच्छे। सनटेक के ऊपर सनटेक के प्री सेल्स नंबर्स आए थे। 395 करोड़ का प्री सेल्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो 17.2% से हायर है। कलेक्शन 214 करोड़ का है। उनके जो लार्ज प्रोजेक्ट है एमएमआर में ओवरऑल पॉजिटिव नंबर्स है, बट कोलते पाटिल से हम लोग कंपेयर करें तो कोलते पाटिल के नंबर फार बेटर आए थे। ओवरऑल आशियाना है, श्रीराम प्रॉपर्टीज है, लोडा है, डीएलएफ है। हम लोग ये स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव है, स्पेशली लोडा और डीएलएफ रियलिस्टिक सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग ओवरऑल पॉजिटिव हैं। देन
नेक्स्ट अपडेट है टाटा मोटर्स के ऊपर 9.9% स्टेक टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने सोल्ड किया है टाटा मोटर्स से अराउंड 1613.7 करोड़ का रतन टाटा एनवायरनमेंट फाउंडेशन के लिए। और ओवरऑल हम लोग देखें तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट है टीपीजी की ग्लोबल की, और ये ट्रांजैक्शन जो वैल्यू है आईपीओ बॉन्ड टाटा टेक्नोलॉजी अराउंड $2 बिलियन है। ये इनलाइन है टाटा मोटर्स के साथ। वो बेसिकली डीलिवरेजिंग स्ट्रेटेजी है अकॉर्डिंग टू कंपनी के रिव्यूज के मुताबिक। देन नेक्स्ट अपडेट है स्पाइसजेट के ऊपर। इंडिगो के जो को फाउंडर है राकेश गंगवाल, उन्होंने बाय स्टेक किया है रिवाइवल एयरलाइन स्पाइसजेट में, जो लेटेस्ट शेयर उसके बाद सर्ज हुआ है 20%। देन अशोक लेलैंड के ऊपर अपडेट है। कंपनी अशोक लेलैंड ने उन्होंने सिक्योर किया ऑर्डर तमिलनाडु स्टेट अंडरटेकिंग, जो सप्लाई करेंगी 1666 न्यू बसेस। सिटी बेस्ड कंपनी ने अपडेट किया है। ये है वो सिंगल लार्जेस्ट BS6 ऑर्डर रिसीव हुआ है स्टेट ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग, एंड ये फर्दर कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी का जो डोमिनेंट पोजीशन है बस इंडस्ट्री में। अशोक लेलैंड ने बोला है कि ये मोस्टली प्रेफर्ड है ब्रांड तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, जो मोर देन 18,000 बसेस है, और ये कंप्राइजिंग होगा 90% उनका जो टोटल फ्लीट है उसके अनुसार। So that's it from our end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.